Prelims is over now, and we are having this GS paper 1 right now in my hand. And let's discuss the answer so that we can have the understanding of the right answer of this paper. As far as the paper as a whole concerned, the paper is not very difficult, but it is also simultaneously not so easy. So you can expect a little bit more, what you can say, cut-off mark, but it is not making huge difference. Yes, this year geography as well as environment, this two chunk is going to be in huge amount in your paper. As I told you in the class earlier, those who are my student, classroom student, can easily solve the geography part because so many questions are there, which is coming from the class notes. And there are few questions, which is actually a kind of prediction. This could be a question you should prepare on this line also. So let's discuss that very question. And this is paper set A we are discussing, and set A, the first question belongs to geography. So first question states that, read the statement, and the statement is like, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Heating of atmosphere, this entire concept was taught in the climatology part when I discussed the heating of atmosphere, heat budget, etc. And I talked about that short radiation insolation, they are penetrating the entire environment, this atmosphere, and they come onto the Earth's surface. Some of them get reflected back in form of albedo and absorbed by the Earth's surface. Then the long-wave terrestrial radiation start going up, and this long-wave terrestrial radiation get absorbed by the greenhouse gases. As I told you, let me explain through what you can say figure-wise as I explain everything. So this is the Earth's surface, and we have greenhouse gases. Suppose that this is greenhouse gases. That include carbon dioxide, water, vapor, as well as polluting gases are also there, but mainly the greenhouse effect of Earth's surface attributed to water vapor as well as carbon dioxide. The incoming solar radiation, which is having high energy radiation, is going to penetrate this cover. This is what insolation. Insolation. And once they get absorbed by Earth's surface, they start radiating back to the atmosphere in form of long wave terrestrial radiation, in form of infrared, long wave terrestrial radiation. And these long wave terrestrial radiation trapped by the greenhouse gases, and then these greenhouse gases reflected back towards the Earth in form of counter radiation. If you remember counter radiation, and this counter radiation is responsible for heating of the atmosphere. Counter radiation. Heating of the atmosphere is due to this counter radiation, and this is causing greenhouse effect or heating of our atmosphere. Now let's come to the question, what they mean to ask. Atmosphere is heated more by incoming solar radiation. Is it true? Answer is no. It is heated by terrestrial radiation. So the atmosphere heated more by incoming solar radiation. A statement is wrong. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave terrestrial radiation or long wave radiation or infrared radiation. This is perfectly right. So statement 2 is right. Statement 1 is wrong. So in order to find the answer, we have to go through the statement, and the statement 1 is incorrect, but the statement 2 is correct. Hence, the answer is going to be delta. That is D. So option D is going to be correct in this case. Okay, option D. Then let's come to the question number 2. Statement 1, thickness of the troposphere
at equator is much greater as compared to the pole? Again, this is the question from your class notes. If you remember the class when I discussed the zonation in atmosphere, I discussed this topic in very elaborate way. I told you that near equator, what happened? At equator, there is establishment of IT, CZ, and due to that, the wind, the trade wind converges over here and start going up. And because this area is having lot of water body, so there is lot of evaporation as well as evapotranspiration. Hence, the air is containing lot of moisture. Moisture-laden air rise up, and as it rises up, what happen? It get cooled, and there is condensation takes place, and there is condensation. And as the condensation takes place, what happen? There is latent heat of vaporization releases over here. Latent heat of vaporization again warm up the air, and then air further rises up. And this goes on so many times, and that's why you happen to have various stage of cloud formation, and thick cloud are going to be formed. Every time there is condensation, there is release of latent heat, and this latent heat acts as a heat engine that further rises up the air to the higher level. As long as the supply of moisture is there, the air rise up, and there is thick vertical extent of cloud formation is there. And in the process, heat transferred up to the tropopause, and height of tropopause become 18 kilometer. Okay. So height of tropopause at equator is 18 kilometer, or thickness of troposphere at equator is going to be huge. It is because of rise of convectional current. Every time there is a rise of convectional current, release of latent heat, this latent heat of vaporization further heat up the air, and air rise up, there is a moisture supply, and that's why you will find there is a vertical extent of cloud formation at equator. By 4 p.m., since morning to 4 p.m., there is continuous rise of convectional current, and after 4 p.m. there is a rainfall, which is called as 4 p.m. rain. It is characteristic feature of equatorial climate also. Okay. So why this kind of height is there? Because of rise of convectional current. Convectional current. That heat transfer is taking place up to higher extent. That's why it is 18 kilometer thicker. Now read the statement, and I discussed it in the class in elaborate way. Thickness of troposphere at equator is much greater as compared to the pole. This is right answer. At pole, what happened? There is colder air, colder air is going to be denser, and denser air tend to sink. And sinking air is creating polar vortex over there, and hence the thickness is just of 8 kilometers. What is the statement 2? At the equator, heat is transported to great height by strong convectional current, isn't it? So, statement 1 is correct, statement 2 is also correct, and not only correct, it is explaining the entire process. That's why both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 explain the statement 1 is going to be the best choice. So, this is right answer, and hence answer is alpha. Question number 2, answer is A. Is it okay? Fine. Let's come to the next question. And the next question is number 3. Again, come to the question and read the question. This question belongs to volcanism. And again, it is from your class notes. If you see the class notes, you will find I discussed some terms related with volcanism. And in the terms, I discussed pyroclast, pyroclastic material. And on the very basis of size, I also classified this pyroclastic material into boulder,
pebbles, cobbles. Okay, and then we have what you can say ash, dust. Dust happen to be the smallest, what you can say, pyroclastic material. Ash, dust. We have volcanic bomb. We have volcanic scoria, brazia. We have discussed this all. So pyroclastic material is product of volcanic eruption. Ash and dust is also the product of volcanic eruption. In the same class, I discussed about the impacts of volcanism, and in that I categorically discuss that volcanic eruption is also associated with sulfur dioxide, emission of sulfur dioxide, hydrogen sulfide. I also discussed there is nitrogen oxide, ammonia. These are the nitrogen containing compound which is also released from this eruption. And they have their repercussion in form of acid rain, in form of what you can say global cooling. आपको अगर याद हो पीना तोबू केस स्टडी याद करिएगा, क्लास नोट्स पलटिएगा और बड़ी आसानी से आप देखेंगे these all 1 2 3 4 all are going to be part of volcanic eruption. Hence the answer is going to be D, that is what delta. Question number 3 is delta. Okay, all are part of volcanic eruption. Fine, let's come to the next question. Question number 4, which of the following is our correct inferences from isothermal map in the month of January? In the month of January, there is a thermal anomaly in northern hemisphere because northern hemisphere has more land and less water, isn't it? When the what is isothermal line? First, understand isothermal line. That line which connect same temperature. Different places having same temperature. If you are joining all those different places, it is representing the isothermal line. In the month of January, when there is winter in northern hemisphere, what happened? In winter, isothermal line little bit move. At this moment is very less in other ocean except Atlantic Ocean. This isothermal line move little bit towards north, bend towards north on ocean. And if there is landmass, let me show you. Suppose that this is the map. I'm just giving you the map. Not required. This much is enough to make you understand the isothermal line. Okay, so this is Africa. You understand North America, Africa, Europe. Here it is Atlantic Ocean. If you see the isothermal line in the month of January, this isothermal line is a little bit bent towards north, but on the continent, it is going to be south. Okay, on the continent, it is going to be south. Why? On the continent, it is towards south. On the ocean, it is towards north. Isothermal line in January. Okay. This is the isothermal line representing in the month of what? Month of January. Okay, so the bend is towards poleward on ocean surface and towards equatorward on landmass. Okay. Now what happened to Atlantic Ocean? If you see Atlantic Ocean, particularly the 10 degrees centigrade
isothermal line, you will find that 10 degrees centigrade isothermal line in the month of January is much more bent towards north, and it is reaching up to the Western European country. Here you have Greenland. You will find this West European country. This is what England, Scotland, North Sea, and all that. Fine. And it is due to the warm ocean current. Warm ocean current. There is Gulf Stream. Then there is North Atlantic Drift, which divide into three current. One is Irminger warm current, Norwegian current, and Rennell current. So these warm current bringing warm water to this area. That's why this 10-degree isotherm, in case of Atlantic Ocean, it bends more towards north and up to the North Sea, this Western European area. And I also told you that climate of Western European region, this area, is the boon for these area, and it is brought by the warm ocean current, which is North Atlantic drift, that is extension of Gulf Stream. Okay. So this is the entire concept involved in this very question. Now let's read the options. Okay. So the option is the isotherm deviate to the north over the ocean and to the south over the continent in the month of January. This is perfectly correct statement. Okay. So please do read. Sometime you misread the statement. मेरे साथ भी हुआ था. मैं उल्टा पढ़ गया था क्योंकि दिमाग में वो चल रहा था. And hence, this is the right statement. Further, statement 2, try to read it very carefully because there is a trap. The presence of cold ocean current. First thing is cold ocean current, just to confuse you. Gulf Stream, it is warm ocean current. North Atlantic Drift, warm ocean current. Make the North Atlantic Ocean colder and the isotherm bend towards the north. देख रहे हो? देख रहा है ना विनोद? Bend towards the north is right. But why it bend towards the north? क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आपको कहां मिल रहा है? यहां तक मिल रहा है. कौन ले जा रहा है? वार्म ओशन करंट ले जा रहा है. तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इज इट कोल्डर और इट इज वार्मर? व्हाट इज योर टेक? इट इज वार्मर ना. यहां पे जहां फ्रोजन पोर्ट हुआ करते थे नॉर्वे के, रशिया का मरमस्क, नॉर्वे, फ्रांस, इनके पोर्ट, जर्मनी, और आपका जो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ ग्रेट फिशिंग जोन नॉर्थ सी में है. कैसे बना? क्योंकि वार्म वाटर कमिंग ओवर देयर एंड देयर इज rainfall in the winter, and winter rainfall create moderating effect. The chilling winter become moderate, and there is a rise of 10 degree to 12 degree centigrade temperature of that very area. And winter is moderate, summer is moderate, both are having rainfall. So throughout the year you happen to have wet climate. This is the best kind of climate attributed to the ocean current. So in this case you will find the North Atlantic Ocean, this area is warmer, not the colder, and this warmer area is because of warm ocean current, not because of cold current. That's why the statement has to be understood in a proper way, and statement happen to be wrong. Okay, why? Because bend towards north is right, but presence of cold ocean current and all that make North Atlantic Ocean colder. This is wrong. That's why statement 2 is wrong, statement 1 is correct. Hence what will be the answer? Using the code below, 1 only is the right answer. Correct ढूंढना है ना बच्चे? Isotherm deviate. Okay, inference. So inference 1 is going to be there. 2 is not the inference which we brought from the isothermal map in the month of January. Okay. Next question, number 5. Which of the following country are well known as 2 largest cocoa producer in the world? This is world regional geography question, resources, and that too agriculture. And when you see the agriculture part, you will find that the country Ivory Coast and Ghana is well known producer of cocoa. The largest producer of cocoa. They are the wet country, and for cocoa production you require a lot of rainfall.
So these are the equatorial country where you will find lot of cocoa production. So answer is going to be C, Charlie. Okay. Next question. With reference to the Himalayan river joining the Ganga downstream of Prayagraj, try to understand Prayagraj के बाद की बात कह रहा है. From west to east, which one of the following sequence is correct? बहुत आसानी से, इससे easy सवाल हो ही नहीं सकता. We can't expect this question for UPSC, क्योंकि आप सब ने बहुत अच्छे से गंगा रिवर सिस्टम किया है. अगर आपको याद हो तो गंगा, भागीरथी, अलकनंदा मिलती हैं, देवप्रयाग, उसके बाद ये गंगा बन जाती हैं और गंगा आगे चली जाती हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में, जहां पे ये वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में एक हुगली और दूसरी गंगा के रूप में कहां चली जाती हैं बच्चे? बांग्लादेश. यहां पे प्रयागराज है. प्रयागराज, the king of the Prayag, the king of the confluence is called as Prayagraj, जहां पे गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यमुना आकर के मिलती है. यमुना join it at Prayagraj. Okay, this is Prayag Raj. And you know there it is what? Right bank tributary and the left bank tributaries are Ram Ganga, जो कन्नौज के पास मिल जाती हैं बच्चे, पहले है प्रयागराज से. फिर उसके बाद आती है गोमती. गोमती कहां से आ रही है बच्चे? गोमती आ रही है गोमल ताल से, और ये वाराणसी से आगे जगह है गाजीपुर जहां पे मिलती हैं. सो दिस इज गोमती. गोमती इज फेमस river as the capital of Uttar Pradesh situated. Lucknow is situated at the bank of Gomti. Jaunpur, which is also called as Siraj of India, is also situated at the bank of Gomti. And this is what? Gazipur. And after Gomti, you will find another tributary of Ganga, massive tributary, major tributary, that is what? Ghaghra. And Ghaghra drain its water in Bihar near Chhapra. This is Ghaghra. Ghaghra, and the place is Chhapra, Bihar. And next tributary is Gandak, well-known, notorious tributary for changing the course. And this Gandak, followed by Kosi. Kosi is also, this is Gandak, and here it is Kosi. Kosi is also notorious, just like Gandak. It is infamous for changing the course and bringing every year flood in North Bihar. So this Kosi, and after Kosi we have Mahananda. Mahananda, और महानंदा के बाद, फरक्का के बाद गंगा जो है डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली और गंगा के रूप में डिवाइड होती हैं एंड आगे चली जाती हैं. उसके आगे की कहानी की जरूरत नहीं है. अब आप देख लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट आना है हमें प्रयागराज के बाद. चलिए, ये रहा आपका सीक्वेंस, वेस्ट टू ईस्ट. अगर आपने इस तरह से मैप बना के अपने क्लास नोट्स में लिखा है, जो कि मैंने कराया है, बोर्ड पे भी कराया है, तो आपको इस सवाल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. अब आप ही बताइए क्या करें? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इज इट राइट आंसर? आंसर इज यस. So option B is going to be the correct one. Fine. Option B is correct one. Fine. Next question is question number 7. It is a beauty of geography question. Why it is beauty? Because there is a dispute, lot of dispute in so many coaching center. They are having their own explanation. But I discussed you the process of weathering, and more precisely chemical weathering. The first statement, let's find out. Rainfall is one of the reason for weathering of the rock. Is it right? Yes, water is responsible for weathering of the rock, in situ disintegration of the rock. हमने पढ़ा था. दूसरा स्टेटमेंट है बच्चे, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन. तीसरा स्टेटमेंट है, रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन.
रेन वाटर कंटेन्स एयर, एयर डिफ्यूज्ड इनसाइड द रेन वाटर। और एयर अगर डिफ्यूज होती है, आइए इसको जरा सीखते हैं, क्योंकि इस पे डिस्प्यूट है और बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर से लोग बता रहे हैं। कहां से पढ़ा है मुझे नहीं पता। वेरी सिंपल पैरामीटर, दैट इज व्हाट, रेन वाटर। ये रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे आना शुरू करेगा बच्चे, तो इट विल बी इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, एंड व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ दिस dynamic interface, there will be simple diffusion of air. Carbon dioxide is an integral part of air. There is nitrogen, there is oxygen, there is carbon dioxide. These are the important gases. So if air diffuse inside the raindrop, so what happen? Obviously, there will be oxygen. So raindrop containing air, and this is the reason when there is waterlogging due to rain, it is not going to create fog condition, it is not going to create oxygen deficient condition. क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉप, रेनफॉल के अंदर ऑक्सीजन है, एयर है, वो उस एरिया में पानी में एयरेशन बनाए रखती है। इवन सॉइल के अंदर तक एयरेशन बना रहता है, बिकॉज द फर्स्ट वाटर, रेन वाटर percolate inside the soil. Fine. So you happen to have nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. All air is going to be part of this raindrop. This is for sure. Is it okay? This is the reason carbon dioxide dissolved in raindrop. That's why you happen to have pH value, which is going to be 5.6, slightly acidic pH of rainwater. होता है ना, slightly acidic. क्यों होता है? क्योंकि when water reacts with carbon dioxide, it is going to form carbonic acid. कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यहां तक की बात अब समझ चुके हैं। तो आगे भी मैंने आपको बताया था केमिकल वेदरिंग के बारे में। क्या बताया था केमिकल वेदरिंग? याद करिए क्लास। केमिकल वेदरिंग आपको मैंने बताया था कि वाटर इज गोइंग टू बी द मोस्ट मिस्चीवियस एजेंट, और इसके दो सीधे साधे साथी होते हैं, एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे का नाम है ऑक्सीजन। ये दोनों वैसे वाले साथी हैं जो गांव से आए हैं और यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। इनका कोई लेना देना नहीं, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पानी इनका वो वाला दोस्त होता है, याद करो मेरे मजाक भी बड़े सटीक होते हैं और यूपीएससी वाले पूछते हैं, वो वाला दोस्त होता है जो कहता है एक दिन पीने से कुछ नहीं होता। बताया था क्लास में, याद है आपको? मुझे उम्मीद है याद होगा। अब क्या होता है कि ये ऐसे बदल जाते हैं दोनों, इतना वेदरिंग करते हैं कि पानी को भी अंदाजा नहीं होता, उसको भी लगता है कि आई हैव क्रिएटेड मॉन्स्टर आउट ऑफ अ सिंपल कॉमन मैन, इजंट इट? ये वो दोस्त हैं। क्या करते हैं बच्चे? मैंने आपको बताया था कि इनसाइड द रॉक देयर इज केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग ड्यू टू वाटर। वाटर क्या करेगा? ये पहले तो सोल्यूशन बनाएगा कि पहले जो डिसॉल्व है उसको डिसॉल्व कर दें। तो रेन वाटर गिरेगा तो सॉल्यूशन बनाएगा कि नहीं? आंसर है हाँ। जो सॉल्युबल होंगे वो घुल जाएंगे। लेकिन मैंने ये भी बताया था, उस समय मैंने कुछ बातें मजाक मजाक में बोली थी कि देयर आर सम सॉल्ट विच इज अनडिसॉल्व बट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर। तो दूसरा काम क्या करता है बच्चे? हाइड्रेशन, है ना? वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस एरिया में वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब बताओ ये वीक जोन बना कि नहीं? आंसर है हाँ, बन गया। तीसरी बात मैंने बताया था कि वाटर, कुछ ऐसे मिनरल होंगे, मैं आज नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस समय मैंने बताया था कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल मिनरल, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर इससे कहेगा यार घुल जा, मेरी पार्टी में आ जा, कहेगा नहीं नहीं हम नहीं खुलेंगे। तो वाटर क्या करेगा बच्चे? वाटर विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ऐसे कौन से इनसॉल्युबल मिनरल हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, सॉल्ट। दे आर इनसॉल्युबल इन सिंपल वाटर, दे आर नॉट गोइंग फॉर सोल्यूशन और हाइड्रेशन। तो यहां क्या करता है बच्चे? कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड कार्बोनिक एसिड में दे आर रेडिली सॉल्युबल, रेडिली सॉल्युबल।
रेडिली सॉल्युबल होंगे? यस और नो? आंसर इज यस। घुल जाएंगे तो वेदरिंग होगा कि नहीं? आंसर हाँ होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेदरिंग। इज इट ओके? अब बारी है ऑक्सीजन, जिस पे लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेट मी एक्सप्लेन दिस। ऑक्सीजन और वाटर लीथल कॉम्बिनेशन है बच्चे, इन्हीं के लिए आयरन एल्यूमिनियम इनके ऑक्साइड बना देगा। आपने देखा है रस्टिंग कब होती है? रेनी सीजन में you will find the rusting is going to be readily occurring outside. Why? Because of the water as well as high temperature. So water along with oxygen will go oxidation reaction. ऑक्सीडेशन, और ये लोहा था, आयरन था, कहा हम न टूटेंगे, कहा तुम्हें तोड़ के दम देंगे। कैसे तोड़ा? रस्टिंग की गई, ऑक्सीडेशन किया गया, आयरन ऑक्साइड बने। और आपको पता है, आप आयरन की रॉड पे हाथ फेरो तो आयरन ऑक्साइड आर इजिली रिमूवेबल, आराम से हटा दिया जाएगा। तो क्या रॉक से आयरन ऑक्साइड नहीं हटेगा क्या? आंसर है हाँ। क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन। किस कारण से हुआ? दिस ऑक्सीजन कहां से आया? ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर in form of dissolve as well as outside the atmosphere. So in this case, let's come to the question paper. Statement 1, rainfall is one of the reason for weathering of rock. Answer is yes. Solution, hydration, oxidation, carbonation, hydrolysis, every process will takes place. The chemical weathering is taking place. Okay. Then statement 2, rainwater contain carbon dioxide in solution. Answer is yes. Dissolution means air diffuse inside the raindrop. Carbon dioxide, hence there is carbonic acid formation, and then carbonation is going to be part of that. And the third is, which is controversial for everyone, but it is very simple, rainwater contain atmospheric oxygen. Sir, जब air diffuse हो गई तो oxygen क्यों नहीं होगी? And not only this, if you see a research paper on ResearchGate in 1957 in Tokyo, this research was done with respect to agricultural productivity and rainwater. And in that very research, it was found that the rainwater contains oxygen also, isn't it? So when oxygen and air will be there in rainwater, obviously it will undergo oxidation. That's why what I think, with responsibility I am saying this, because बहुत सारे लोग मुझसे इतर आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी उसी पे टिका हुआ हूं, क्योंकि it has some basic predicaments. That's why I am putting all these things in one word, and that is what statement 1. Both the statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. So I will go with alpha. So this is my take, alpha. The right answer is alpha. Both the statement are correct. And it is explaining the first phenomena. Ki rainwater is also causing weathering, chemical weathering. So what is your take? And you can keep it for UPSC response. UPSC क्या कहता है? बहुत सारे लोगों ने कहा है कि both the statement 2 and 3 are correct. One of them explaining the statement 1. अगर 2 और 3 correct हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में है, तो कार्बोनेशन ऑक्सीडेशन होगा, इट इज बट ऑब्वियस। इसलिए मुझे बी सही नहीं लगता, ए सही लगता है। बहुत सारे लोगों ने बी को सही माना है, बट आई insist it is the right answer, that is what A. Okay, let's move on the next question. Consider the following country. When I discussed the world regional geography mapping, I talked about some area which is going to be more important, like South China Sea, East China Sea, Andaman Sea, Indian Ocean, Red Sea. Okay. Then we discussed Caspian Sea, Black Sea region. Then we have discussed the North Sea region and the surrounding area. I also talked about the area where the turmoils are going on, the Gaza Strip area. And I said to you, Mediterranean also, ki please do take care of the bordering countries. And the question is from North Sea. Okay, if you see Finland, Finland is quite away from, what you can say, North Sea. Germany, yes, it is close to
North Sea, Norway, it is close to North Sea, bordering the North Sea. Russia is again much away from the North Sea. So 2 and 3 is going to be the country bordering North Sea, and that's why what will be the option? Only 2. Only 2. So B is the correct answer. Please note it down. B is the correct answer. What next? Let's come to question number 9, and again they have infused one more difficulty level. अब उनके पास लिस्ट A और B नहीं है, उनके पास अब एक कॉन्करेंट लिस्ट C भी जुड़ गई है. जरा ध्यान से देखिएगा. वाटरफॉल, रीजन, रिवर, 3 चीजें दी गई हैं. अब यहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा. जैसे let's come to the धुआंधार waterfall. We all have this idea that धुआंधार waterfall is on नर्मदा, भेड़ा घाट, सब कुछ आपको याद है याद ना? ठीक है. तो धुआंधार और नर्मदा देख करके आपने इसको क्या मान लिया? सही मान लिया. लेकिन जनाब थोड़ा रुकिए, थोड़ा याद कीजिए इंडियन फिजियोग्राफी. क्या बताया था? कुछ बताया था? आइए देखते हैं क्या बताया था. पुरानी यादें. चलिए, बताया गया था बच्चे इंडियन फिजियोग्राफी में, याद आ रहा है कुछ? यहां पे है आपका अरावली, पालनपुर से रायसीना हिल, उसके बाद विंध्यन, गुजरात से बिहार, कैमूर रेंज, सतपुड़ा. बताया गया था? बिल्कुल बताया गया. यह है विंध्यन, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज. Here it is Aravali. This area which is between Vindhyan and Satpura is called as Malwa Plateau. मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटो. याद आ रहा है कुछ? और एक चीज और बताई गई थी बच्चे कि नर्मदा फ्लो कहां कर रही है? नर्मदा इज फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यन एंड सतपुड़ा. दिस इज द नर्मदा. Narmada is a west flowing river flowing into the Rift Valley, between the Rift Valley created Vindhyan and Satpura range. And this Malwa plateau is in between Aravali and Vindhyan range. This triangular plateau belongs to this area. नर्मदा तक नहीं पहुंचा मालवा प्लेटो. अब जरा ये देखते हैं आपके सवाल क्या कह रहे हैं. कह रहा है धुआंधार वाटरफॉल which is on Narmada, that is right, region is Malwa. Is it right? Answer is no. देख लो तीसरी लिस्ट जुड़ने का कारण क्या हुआ. और जिसने धुआंधार धुआंधार तरीके से सोच लिया वो तो गलत करेगा. Are you getting my point? Hundru, it's a waterfall in Ranchi and it is on Chota Nagpur Plateau, Subarnarekha River. तीनों मैच हुए हैं, ये सही है. फिर है बच्चे गरसोपा. गरसोपा के बारे में मैंने आपको बताया था. जोग वाटरफॉल, जिसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, जो शरावती रिवर पे है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न घाट से निकलती है कर्नाटका में. और देखें वेस्टर्न घाट भी सही है, गरसोपा वेस्टर्न घाट, लेकिन रिवर इसने गलत दे दिया. ठीक है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, केवल 2 सही है. हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड? केवल एक में मैचिंग हो रही है जी. मैचिंग किस में हो रही है? कुंदरू वाला सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका अल्फा. दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओनली वन, ओनली वन. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. अगेन there is a C list added. This is a little bit more difficulty infused. अच्छा, ये सवाल भी आपके क्लास नोट्स में है. जरा देखिएगा, जब मैंने आपको माउंटेन पढ़ाए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन कराया है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन कराया है, और आपको मैंने क्या बताया था इसको बाद में देखते हैं. पहले आपको मैंने माउंटेन रेंजेस बताए थे, टाइप्स ऑफ माउंटेन. और इन टाइप्स ऑफ माउंटेन वी डिस्कस द फोल्ड माउंटेन, folded mountain, we have block mountain, we have mountain of accumulation that is called as volcanic mountain like Fusiyama, Vesuvius,
and the third one is residual mountain. Residual mountain. Fourth one is residual mountain. 1, 2, 3, 4. And I have given all the important mountain ranges in the world. Like in folded mountain series, we have seen Andes and Rockies in South America and North America. Then Alpine mountain series, Alps, Caucasus, Taurus, Zagros, Hindu Kush, Suleiman, Kirthar, Himalaya, Karakoram, Kulnul, Tian Shan, Arakan Yoma, these all are Alpine mountain series. And I talked about volcanic mountains, so many volcanic mountains from Africa to entire continent we have discussed, like Kilimanjaro is there, then Mount Vesuvius, Mount Merapi, Mount Mayun, isn't it? Mount Fusiyama, Mount Fuji, Krakatoa, these are the volcanic mountain. And then block mountain, I talked about Vindhyan Satpura, I talked about Vosges, that is in Germany. Black Forest, that is also in Germany. It is an example of block mountain. Try to collect all these information in your notes. इसी तरह से आपके नोट्स में लिखे गए हैं. प्लीज डू रीड. अब आइए पढ़ते हैं, जरा देखें कि क्या क्लास नोट्स से बाहर आए थे. Vosges is the first mountain and it is a block mountain, not the folded mountain, and it is not in Central Asia, rather it is in Europe. It is not in Central Asia, it is in Europe. Germany और फ्रांस के पास है. यूरोप में अगला माउंटेन है बच्चे आल्प्स, दोनों सही हैं, और लिख दिया है ब्लॉक माउंटेन, फिर गलत कर दिया इसने, ये फोल्डेड माउंटेन है. अल्पाइन माउंटेन सीरीज, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन जिसको आप कहते हैं अल्पाइन माउंटेन, that is the youngest orogeny on the earth. Okay, the fourth orogeny which is called as alpine mountain. अल्पाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कंसिडरेबल हाइट के बाद ऊपर सब बर्फ से ढका हुआ है. यूरोप, Alps like mountain, that's why alpine mountain. So it is folded mountain, not the block mountain. तो ये भी गलत हो गया, ये गलत, ये गलत. नॉर्थ अमेरिका में बच्चे Appalachian है. Appalachian is old folded mountain, although it is highly dissected because of the many erosional cycle that have gone over here. But yes, in North America, Northern America, Appalachian, आपको बताया भी होगा, St. Petersburg, the iron capital of the world, it is in North Appalachian. Folded mountain, ये सही है बच्चे. South America, Andes, it is also the folded mountain. The longest mountain series of the world is Andes, and that is the right answer. So 3 and 4 is correct, 1 and 2 is wrong. Try to understand the kind of information they are putting in front of you as a challenge to crack. And it is only cracked once you are going for thorough study. Okay, if you revise the notes, this question can easily be answered. And what will be the right answer? Let's find out. 3 and 4 are correct. So information correctly match only 2. So answer is going to be beta. This is the right answer. Is it fine? Let's move on the next question. And the next question is, consider the following airport: Dhoni Polo Airport, Kushinagar International Airport, Vijayawada International Airport. This is coming from current affairs section. Okay, so greenfield project mein Vijayawada is not there, and 1 and 2 are there. So 1 and 2, this is right answer. 11, you will find the answer is alpha. The answer is alpha. 1 and 2. Dhoni Polo Airport, Itanagar, Kushinagar Airport, it is in Gorakhpur. So 1 and 2 is what? The greenfield airport. Vijayawada greenfield nahi hai. The name Vijayanagar is there, which is in Karnataka. That is the greenfield airport. तो PIB के आर्टिकल में ये बात दी गई थी जुलाई 2023. That's why it is in the news. Vijayawada is not there. These two are going to be there. So 1 and 2 are correct. Let's move on the next question. Question number 12. With reference to water vapor, which of the following statement are going to be correct? Very easy question. Again, when I discussed the introduction to your atmosphere, और जब हमने बातचीत की थी हर एटमॉस्फेरिक गैसेस के रोल की, तो आपको मैंने बताया था वाटर वेपर का काम क्या है. उस प्रोसेस में मैंने ये डिस्कशन किया था. इट इज अ गैस, ऑब्वियसली वाटर वेपर गैस है, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड. याद कीजिए, मैंने आपसे बताया था
कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चे, दिस इज अर्थ, एंड मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कन्फाइंड टू means 50% of the gas is confined just at 5.7 kilometer of height, and up to 29 kilometer you happen to have 97% of the gases. Gases, that means water vapor too. That means most of the water vapor as well as air condensed to the lower atmosphere. It is attributed to gravity. अर्थ की ग्रेविटी है, इनके पास मास है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस आर देयर नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो वाटर वेपर नियर द अर्थ सरफेस ज्यादा होंगे। ठीक, इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है जरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है इट इज गैस दैट अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही हो गया जी। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर मैंने बताया था, तब आपको याद होना चाहिए क्या बातचीत हुई थी बच्चे, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इक्वेटर, दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन 1 to 4% है, जो डिपेंड करता है इवेपो ट्रांसपिरेशन, दिस इज द टू फिनोमिना, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन पे। जहां टेम्परेचर ज्यादा, वाटर बॉडी ज्यादा, वहां इवेपो ट्रांसपिरेशन ज्यादा, जहां टेम्परेचर कम, वहां इवेपो ट्रांसपिरेशन कम। अब आप बताएं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इक्वेटर पे, पोल पे सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वेयर विल बी द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन? आंसर इज इक्वेटर। सो एट इक्वेटर we happen to have 4% water vapor by volume. 4% water vapor by volume. This is the case of equator. That's why you will find a lot of humidity, more than 77% humidity throughout the year, isn't it? And what happened as we move towards pole, amount of water vapor decreases generally. Why I put this generally? Because the western margin in the subtropic, the western margin of the continents have less water vapor. The conditions are there, prevailing over there. That's why the deserts are formed. सही है, वहां क्यों वाटर वेपर कम हो जाता है? क्योंकि कोल्ड ओशन करंट्स आ जाती हैं, टेम्परेचर को नीचे गिरा देती हैं, लेस इवेपोरेशन होता है बच्चे, एयर कंटेन लेस मॉइस्चर। दैट्स व्हाई द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, द एयर मास कंटेनिंग लेस वाटर वेपर। That's why I put generally, not always. But yes, generally, if you march from equator to pole, you happen to have decrease water vapor content, decrease humidity. At pole, we are going to have less than 1% of water vapor. Now let's read the statement. Okay, it is gas amount which decreases with altitude, that is right. And its percentage maximum at pole, it is wrong. तो क्या होगा भाई? Select answer using the code below. क्या फाइंड करना है? करेक्ट फाइंड आउट करना है। ये अंडरलाइन कर लिया करो आप प्रीलिम्स में, कहीं इनकरेक्ट पूछा हो और आप करेक्ट फाइंड आउट करो, और पहला स्टेटमेंट ही गड़बड़ रहेगा। सो इन दिस केस करेक्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन इज रॉन्ग, सो आंसर इज अल्फा। आंसर इज अल्फा। लेट्स कम टू आंसर इज ए, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जिसने वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी ठीक से नहीं पढ़ी, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन ठीक से नहीं पढ़ा, उसको कंफ्यूजन होगा बच्चे। लेकिन जिसने ठीक से पढ़ा है और वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट जानते हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जानते हैं, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ये और कहाँ मिलेगा? ये आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट में भी मिलेगा, वहां थ्रू आउट द ईयर एनुअल रेंज और डेली रेंज टेम्परेचर में बहुत कम वेरिएशन होता है, 27 डिग्री 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यही होता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो इट फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट ऑल्सो। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। यहां से आके लगा कि यार इक्वेटोरियल ही क्लाइमेट है क्या? थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पूरे साल बारिश हो रही है। यहां तक आते आते आपको लग गया कि आंसर हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट होने वाला है, लेकिन तीसरे ने आपको थोड़ा रुकने के लिए कहा रुको, जोश में होश नहीं खोते। देखो, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। अब आपने माथा पीट लिया, अरे यार मैंने तो पढ़ा है मोर देन 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेंज ऑफ
रेनफॉल इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये तो सपोर्ट नहीं करता, तो इक्वेटोरियल तो नहीं रहा। चाइना टाइप नहीं होगा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल नहीं होगा क्योंकि वहां अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम है, एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर आपने पढ़ाई की है तो मैंने ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कवर किया, जिसमें जिसमें मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इज द राइट आंसर, सो आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर दिल्ली। इज इट राइट? फाइन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 15, 14. With reference to the Coriolis force, which of the following statement is correct? भाई Coriolis force apparent frictional drag है अर्थ के रोटेशन और उसकी स्फीरियोसिटी के कारण, लगता है ये कोई रियल फोर्स नहीं है, स्यूडो फोर्स है, लेकिन हाँ इसके कारण कोई भी चीज अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो इट get deflected towards its right in northern hemisphere and towards its left in southern hemisphere. जो चीज जितनी तेजी से चलेगी बच्चे, the movement or the velocity of wind or anything moving horizontally, उस पर फ्रिक्शन apparent friction उतना ही ज्यादा लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। तो in that very sense, apparent frictional drag which is Coriolis force, it increases with increase in wind velocity. हाँ ये बात सही है कि विंड वेलोसिटी अगर तेज है, ज्यादा है, तो उसका डेविएशन भी ज्यादा दिखाई पड़ेगा, डेविएशन भी तेज होगा, यानी कोरियोलिस फोर्स जो एपरेंट फ्रिक्शनल ड्रैग है वो ज्यादा होगा। सेकंड, इट इज मैक्सिमम एट पोल एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर। पोल पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे ये होता ही नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है, दो पॉइंट जो है इक्वेटर पे ही है, तो कहाँ रिलेटिव मोशन होंगे। जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की ओर बढ़ते जाते हो, अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इट इज इनसिग्निफिकेंट, अप टू 8 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इट इज लिटिल बिट सिग्निफिकेंट, लेकिन अप टू 0 to 8 डिग्री आपको साइक्लोन से नहीं बनते, डिफ्लेक्शन बहुत मामूली होता है। लेकिन जैसे ही 8 डिग्री के बियॉन्ड आप जाते हैं, देयर इज अ डिफ्लेक्शन एंड वर्टेक्स क्रिएटेड, एंड दैट इज द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन। Okay, so it increases with increase in the wind velocity, right? It is maximum at pole and absent at equator. Both are correct. So answer is going to be Charlie. C will be the right answer. Is it okay? C will be the right answer. Note it down. Let's come to the next question. On June 21 every year, which of the following latitude experiences a sunlight of more than 12 hours? मैंने आपसे सवाल कहा था, क्या कहा था इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस पढ़ाते समय, कि दे विल गिव यू डेट और ऑन पर्टिकुलर डेट आपको डे ड्यूरेशन नाइट ड्यूरेशन बताना पड़ेगा। मैंने इतनी तैयारी आपकी करवाई थी, ऑल दो यूपीएससी ने उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं किया, इसने बड़ा बोगस सा सवाल दे दिया कि 21 जून को बता दो, तो हर कोई कर लिया होगा। मैंने तो आपको 14 फरवरी को सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बना के दिखाया था, 15 अगस्त को भी बना के दिखाया गया था, बताया था ना, आप ही लोगों ने कहा सर 15 अगस्त पे बता दीजिए। फिर कुछ बच्चों ने पीछे, उस समय फरवरी का महीना था, कुछ को 14 फरवरी की लगी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा सर 14 फरवरी को क्या होगा, वो अपना भविष्य चेक करना चाहते थे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन में, मैंने वो भी बताया था, मजाक कर रहा हूं। बट अगर आपने वो क्लासेस की हैं बच्चे, तो आई डोंट थिंक कि इस सवाल को लगाने में आपको कोई दिक्कत होगी। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, लेट्स कम टू द डिस्कशन, एंड 21st June is the date. Here it is equator. This is Tropic of Cancer, 23.5 degree north, and this is Tropic of Capricorn, 23.5 degree south. Here it is North Pole. This is South Pole. And what is the condition? Sun's rays are vertical over Tropic of Cancer on 21st June. This is the date of summer solstice. Summer solstice. समर सॉल्स्टिस में सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है बच्चे? इट क्रॉसेस द नॉर्थ पोल, इंटायर नॉर्थ पोल इज इन लाइट एंड इंटायर साउथ पोल इज इन डार्क। ठीक है, ऑन इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर यू हैपन टू हैव 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट। तो इक्वेटर पे तो 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात, इक्वेटर वालों को कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं ये क्या बकवास कर रहे हैं ज्योग्राफी वाले।
हमारे यहाँ तो 12 घंटे के दिन 12 घंटे के रात पूरे साल भर चलते रहते हैं। ये कैसी बातें चल रही हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी जानता है उसको पता है। दिस इज व्हाट सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब जरा देखो, इक्वेटर तो कट गया, यहां सिर्फ 12 घंटे, मोर देन 12 आवर है ना बच्चे, तो इक्वेटर पे तो 12 आवर का ही है डे एंड नाइट। बट एज यू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, you will find that on Tropic of Cancer you are going to have 12 hour plus additional hours. Daylight additional होगा कि नहीं? Answer is yes. So Tropic of Cancer पे 12 घंटे से ज्यादा daylight होगा। ये रहा आपका आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आर्कटिक सर्किल। बच्चे 21 जून को 66.5 पूरा का पूरा ये आर्कटिक सर्किल इल्यूमिनेटेड होगा 24 घंटे के लिए, ठीक है, 24 घंटे के लिए। दैट्स व्हाई यू हैपन टू हैव मोर देन 12 आवर डे लाइट एट आर्कटिक सर्किल आल्सो। और यहीं पे नॉर्वे, फिनलैंड ये कंट्री हैं जिसको कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ये सारी बातें आपसे डिस्कस हुई थी कि नहीं? और मैंने ये कहा भी था कि नेक्स्ट लेवल पे अगर ये पूछ सकते हैं, इनकी औकात होगी, तो ये किसी अलग डेट पे अदर देन सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स पूछेंगे। आप रेडी रहिएगा। आई होप कि इसके लिए आपको रेडी रहने के लिए, रेडी होने की भी जरूरत नहीं थी, इजंट इट? अब चलिए आइए आंसर पढ़ते हैं और देखते हैं। So on 21st June every year, which of the following latitude experience a sunlight more than 12 hour? अगर ये 12 आवर होता तो इक्वेटर भी आ जाता, लेकिन 12 आवर से ज्यादा की बात करनी है तो इक्वेटर नहीं होगा जी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो बिल्कुल नहीं होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। सो करेक्ट आंसर इज 2 and 4. So 2 and 4 is in option D. Delta is going to be the right answer of question number 15. टाइम ज्यादा हो रहा है, अगली क्लास भी है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। Okay, question number 16, it is from current affair, but you should know that in tropical region, Congo Basin is going to be the biggest peatland area. Peatland are those area जहां पे अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल पड़े हुए हैं। अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल अगर डिकम्पोज होंगे बच्चे तो ऑब्वियसली उससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलेगी एंड इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्गो बेसिन। सो प्लीज मार्क द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, largest tropical peatland which hold about 3 year worth of global carbon emission from fossil fuel and the possible destruction of which can exert detrimental effect on global climate change. बच्चे अंदर आ सकते हैं, बैठ जाएं चुपचाप, बुला सकते हैं आप, ठीक है? ठीक है बच्चे। सो इतना कार्बन इमिशन, वहां कार्बन कंटेंट छिपा हुआ है जो 3 साल के ग्लोबल कार्बन इमिशन के बराबर है, और वहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उस डिस्ट्रक्शन के कारण डिकम्पोजिशन होगा एंड एट दैट वेरी केस व्हाट हैपन, देयर विल बी increased global warming. The answer is Congo Basin. Let's come to the next question. And the next question with reference to, this is part of your environment and ecology. I'm not going to touch it. Okay, fine. Neeraj sir will discuss it. Okay. Again, this is also going for general science question. Fine. That's why I'm leaving it. Question number 19. Okay, this question is from agriculture. क्लास में बच्चे आ गए हैं, आप लोग आराम से बैठिए। ये पिछले साल वाले बच्चों के लिए डिस्कशन है। अभी जो आपका प्रीलिम्स का पेपर बीता है, आपको अंदर आ जाना चाहिए था, आप लोग भी देख लेते। सो क्वेश्चन नंबर 19, this is from agriculture. You can put it in general science also, general science as well as agriculture. Groundnut Arachis hypogaea, that is what leguminous plant. It is the largest oil seed of India, 50% groundnut. It contributes 50% of oil seed production in India, and it belongs to family Leguminosae or family Fabaceae, that is called as pea family. Okay, horse gram, that is also a pulse. Kulthi कहते हैं बच्चे इसे, it's very nutritious. So kulthi, horse gram, is also belongs to this pea family. And soybean, that is also oil seed, and this is also going to be the oil seed. And here it also, glycine max is the botanical name. It also belongs to family Fabaceae or Leguminosae. So all are going to be one family, that is what? Legume. And hence the answer is
All the three. All the three will be the right answer. And hence, Charlie is going to be the right answer. Okay. After 19, what will be the next question which belongs to geography? Let me check. Fine. Okay, fine. There is question number 32. Question number 32. Let's come to the question number 32. Question number 32. बहुत अच्छे समय पे मेरी क्लास के बच्चे भी आ चुके हैं जिनको अगले साल देना है, और आज जो क्लास शुरू होगी उस क्लास से ये क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 आज आप पढ़ेंगे। आप देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जायंट स्टार live much longer than dwarf star. Giant star and dwarf star, this is a classification of a star on the very basis of its size. If size is going to be massive, like more than 8 solar mass, such stars are termed as giant star or bigger star, massive star. If it is less than that, it is going to be called as small star, or you can say dwarf star. It is not white dwarf or red giant. That is different. They are the life phases of a star. उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां क्या है बच्चे? जाइंट स्टार। अगर स्टार बहुत बड़ा है, इफ स्टार इज जाइंट स्टार, देन व्हाट हैपन, जो कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होगा वो रैपिड होगा, बहुत तेजी से उसका हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा होगा, और तेजी से हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो उसका लाइफ शॉर्ट होगा, लॉन्ग नहीं होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो छोटा स्टार है उसका जो कोर है, कोर छोटा होगा, कोर में रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विल बी लोअर, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई द जाइंट स्टार हैज शॉर्टर लाइफ एंड dwarf star has longer life. So statement 1 is giant star live much longer. It is wrong. And dwarf star for less time, isn't it? So statement 1 is incorrect. Then statement 2, compared to the dwarf star, giant stars have greater rate of nuclear reaction, greater rate of nuclear fusion reaction. That is true. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा होने के कारण जाइंट स्टार जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल्दी अपने ओल्डर स्टेज में पहुंच जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बना के, ब्लैक होल बना के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 इज राइट, 1 इज इनकरेक्ट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज डेल्टा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इज इट फाइन? सो मार्क दिस क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी और हमने इसे क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको पुरानी यादें ताजा हो गई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास तो चलती रहती है, किताबों में चीजें लिखी रहती हैं, याद नहीं आता, याद किसी और की आती है ना? अगेन दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी, नीरज सर विल डिस्कस। ओके, ये भी नीरज सर की जिम्मेवारी है। अगला क्वेश्चन 41, जल्दी से चलते हैं। 41, द टोटल फर्टिलिटी रेट in an economy is defined as this TFR, total fertility rate, is part of census, जो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। It is part of social issue, social issue में भी census जब पढ़ाया जाएगा वहां भी आप देखते हैं, and it is also the part of economy. total fertility rate क्या है बच्चे? एक महिला अपने पूरे फर्टाइल पीरियड में, फर्टाइल एज में जितने बच्चे जन्म देती है उसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। सो बाय डेफिनेशन इफ यू गो, so the D option, the average number of live birth a woman would have by the end of her childbearing age, is the right answer. So conceptual question hai, delta is the right answer. What will be the next question? I think geography is over now. एक और सवाल है बच्चे 67, दैट इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर। सेंसस जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम लोग कवर करते हैं, यूरोपियन कंट्री के पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कुछ दिया हुआ है। लेट्स फाइंड इट आउट, दैट इज आल्सो इन करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 67, consider the following country: Italy, Japan, Nigeria, South Korea, South Africa. Which of the above country are frequently mentioned in the media for their low birth rate or aging population or declining population?
अच्छा, अंदाजा लगाना हो तो लगाइए जरा। तो एजिंग पॉपुलेशन के लिए जापान, ठीक। साउथ कोरिया, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इटली। क्यों अंदाजा लगाता है? क्योंकि आपको नाइजीरिया वाले भाइयों पे पूरा भरोसा है। अफ्रीका वाले अभी भी सुन नहीं रहे हैं, अभी भी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं। पढ़ेंगे हम लोग पॉपुलेशन सेंसस जब पढ़ाऊंगा। सो ये तो नहीं होंगे, इनकी शक्ल ही नहीं लगती। ये तीनों, इटली, जापान और साउथ कोरिया, यानी 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 is in Charlie. So this is the right answer, alpha. Oh, sorry, 1, 2 and 4. This is alpha, not Charlie. It is alpha. A is correct. So this is all about your discussion. I hope कि आपने पेपर मिला लिए होंगे। आप अगर क्लास नोट्स देख रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई सवाल आपके क्लास नोट से बाहर आया होगा। अगर आया है तो मुझे बताइएगा। मैं अभी भुवनेश्वर में हूँ, आपका मन करे तो मिल लीजिएगा। और जो लोग मेंस दे रहे हैं वो तो जरूर मिले, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर दिस रिकॉर्डिंग। थैंक यू।